Listen to that. Yeah. What I said, that the frequency doesn't change, is it? Yeah. Right. So there's this sun which is emitting white light, and that white light has this red, yellow, orange, green, violet, and all these seven colors present. Whatever frequency light this sun has produced, frequency of the light stays the same. Frequency of the light stays the, let's say it has emitted a red wave, a red wave. So that red wave frequency will stay the same throughout. Let's say it emits a green wave. The green wave frequency will remain the same throughout. Let's say it emits a blue wave. The blue wave frequency will remain the same throughout, right? The frequency will remain the same for each of the wave. The frequency will remain the same for each of the wave, right? But all these waves are different components. They have different frequencies. Okay, Oh, but so they're like different from each other. they are different from each other, and each of one has their own frequency. Where, despite the Oh, fact when they were present over here, where they look to be a single color, even then they had different frequencies. Okay. right. So when it changes from red to violet, so the frequency increases and the wavelength decreases. Yeah. So I'm saying that red has the least frequency, orange has more frequency, yellow has even more frequency, green has even more, blue has more, violet has the most frequency. Violet has the most frequency. And if I talk about wavelength, this has the least wave, this has the most wavelength, the greatest wavelength. It has lesser wavelength, it has more lesser wavelength, it has even more lesser wavelength, it has lesser wavelength, and the last one has the least wavelength. Assalamu alaikum. All क्लास में right. हूँ जी, उसका जी फरमाए. अच्छा, अबू से तो कोई बात नहीं हुई आपकी? अच्छा, बस मैं यहाँ से, हाँ, मैं यहाँ से फारिग होऊंगा 5:30 बजे. सॉरी, 5 बजे नहीं, 5:30 नहीं, 6:15 बजे. जी, तो जी मैं 6:15 पहुंच जाऊंगा, समझ लें आपके पास, इंशाल्लाह 6 और 6:15 के बीच में पहुंच जाऊंगा. अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. ओके, अस्सलाम. जी, एक आलिम साहब है, आलिम है, उस्ताद है, पढ़े हैं उनसे, बहुत कुछ सीखता हूँ, इंसानियत सीखता हूँ उनसे. यहाँ की जब बिगड़ता हूँ फिर जाता हूँ इनके पास, फिर वापस आता हूँ. Okay. All right. So I hope that's clear now. So Yeah. the first thing in this chapter, देखो, I hope हम focus कर रहे हैं. This देखो पूरा स्पेस का क्वेश्चन पूरा आर्ग्यू करके कह रही है मुझे, पूरा स्पेस का क्वेश्चन सही बोला था ना मैंने. हाँ, you were right. तो क्या नाम था उसका? इसका सारिम का नहीं, सारिम नहीं यार. हाँ, वही. But then you keep bringing it up. Oh my god, nothing like that. I can assure you. अब मुझे पता है, मुझे पता है इसको. I know. अच्छा, ये स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? All right. Yeah. Okay. So this is the first learning content. Describe dispersion of light as illustrated by action on light of a glass prism. This is done. Then the second thing is state the colors of the spectrum and explain how the colors are related to the frequency and wavelength. This is done.
Then it says state all electromagnetic waves travel with the same high speed in air and state the magnitude of the speed. So all electromagnetic waves. Now see, there's a family. हम जिस family से belong करते हैं, we have some common properties. आप जिस family से belong करते हो वहाँ कुछ certain norms होंगे, आपके अलग होंगे, आपके अलग होंगे, आपके अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, right? बट आपके फैमिली के जितने मेंबर्स होंगे वो सब कुछ नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होंगे. ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर अ फैमिली ऑफ वेव्स, दे आर अ फैमिली ऑफ वेव्स, एंड दैट फैमिली, हर फैमिली का नाम अलग अलग होता है. सो दिस फैमिली इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. This family is called electromagnetic waves, and this consists of seven members. This consists of seven members. Yes. Hina, Vada, am I audible? Sir, ultraviolet Yeah. होते हैं. UV. Ultraviolet. ये मिट गया, ये मिट गया. Ultraviolet. All right. So So they are from the same family, but they have different qualities. yes, gamma Sir, rays, can I get X-rays, a recap of ultraviolet, what we were visible doing? light, infrared, microwave, radio waves. Right? These are all from a single family, which we call electromagnetic waves. They all have something in common. So we need to know that common properties. You need to learn 3 to 4 properties that are common, because examiner do ask about the common properties most often. At times he gives you 2 properties and asks you to define to write 2 more or 1 more. So you need to know at least 3 to 4 properties of this list of 9 properties. The first thing is that all these electromagnetic waves, they are all transverse. They are all transverse. Secondly, they can travel through vacuum. That means they do not need a medium to travel. They do not need a medium to transfer energy. Like I talk about rope waves. Until and unless there are no rope particles, you cannot form a wave on a rope. I talk about water waves. Until and unless you have water particles, you cannot form a wave. If I talk about sound waves, until and unless you have air particles, you cannot form a sound wave. If I talk about spring waves, until and unless I have a spring, I cannot form waves on the spring. I cannot form waves on the spring, right? So all those waves which need a medium, all those waves which need a medium, that those waves are known as mechanical waves. But those waves which do not need a medium, like these electromagnetic waves, though these are known to be electromagnetic waves. उस family का नाम क्या है? Electromagnetic waves. All these electromagnetic waves have the first property in common, that is they are transverse. They are transverse. अब transverse कैसे होते हैं? ये है electromagnetic. There are 2 fields. One electric field, second magnetic field. Electric field, magnetic field. Now you have learned कि sir, electromagnetic transverse waves में क्या होता है? The wave is perpendicular to the direction of oscillation. The wave is perpendicular to the direction of. अब यहाँ पर क्या oscillate कर रहा है और क्या wave है? That's Oscillation is the amount of waves travel per. रुक जाओ सुन लो. देखो, let's say this is this is electric wave. This is the electric field. It's oscillating horizontally, है ना? Now the magnetic field will oscillate perpendicular to this. So are these 2 waves oscillating at right angle to each other? Yes. One is electric field, the other is magnetic field. So the 2 fields oscillate at 90 degrees to each other. The 2 fields oscillate at 90 degrees to each other, and they form a wave traveling horizontally. They form a wave traveling horizontally. This is called electromagnetic wave. This is called a transverse wave. You have the direction of wave at 90 to the direction of oscillation. Sir, तो अगर draw करने को बोलेंगे ये दोनों waves बनाएंगे. ये ड्रॉ करने को नहीं आता. ये ड्रॉ करने को नहीं आता. सिर्फ मैं ये समझा रहा था कि how are they transverse. Okay. They can travel through vacuum. That's the second property in common. ये सब vacuum से travel कर सकते हैं. मतलब अगर एक खानदान को बिरयानी पसंद है तो उसके सारे members को normally बिरयानी पसंद होती है. सही है. So they all travel with same speed. इन सब की speed होती है speed of light. इन सब की speed होती है speed of light. 3.0 10 power 8. This is what you should know by heart. ये चाहे तुम as a property याद करो ना याद करो, ये value याद करो.
तो ये वैल्यू जब याद करोगे इससे दो फायदे होंगे. यू आर गोना स्कोर 2 मार्क्स. हाउ? एक तो ये वैल्यू पूछने को आता है, वो कहता है स्टेट द वैल्यू ऑफ लाइट. फिर वो आपसे पूछता है कि टेल प्रॉपर्टीज कॉमन टू द electromagnetic waves. So you will just say that they all have the same speed. That's the speed of light, 3.010 power 8. Right? They all obey laws of reflection and refraction. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमने जितनी लॉस पढ़ी थी सबके सब यहाँ ओबे होती है. देयर फ्रीक्वेंसीज डू नॉट चेंज. मतलब हर एक की जो जो फ्रीक्वेंसी है वही रहेगी. ये नहीं है कि येलो लाइट की तो सेम है, रेड लाइट की चेंज हो गई. नहीं, रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रू आउट सेम रहेगी. नहीं, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी ना. अच्छा, ओ माय बैड. हाँ, जब आपके पास लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो इसका स्पीड और इसका वेवलेंथ चेंज होगा, पर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती. फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज हो जाएगी. ठीक है, चेंज नहीं होगी. चेंज नहीं होगी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल स्टे द सेम ऑलवेज. हाँ, वेवलेंथ चेंज होगी और स्पीड चेंज होगी. उसके बाद आपसे कह रहे हैं दे कैन बी एमिटेड एंड एब्सॉर्ब्ड. सो आपके पास सारा का सारा मैटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट भी कर सकता है और एब्सॉर्ब भी कर सकता है. फ्रॉम द सन वी गेट 3 टाइप्स ऑफ वेव्स: infrared, visible light and ultraviolet. Infrared, visible light and ultraviolet. Infrared is the part of the spectrum which we can feel. How? When we absorb infrared, we feel warm. Visible light is the part of the spectrum which we can see, and ultraviolet we cannot see. Ultraviolet we can not see. So हम visible electromagnetic spectrum का जो part देख सकते हैं वो है visible light. जो part feel कर सकते हैं वो है infrared. इसके अलावा न कुछ हम देख सकते हैं न फील कर सकते हैं. गामा रेस को हम देख नहीं सकते न फील कर सकते हैं. एक्स रेस को न देख सकते हैं न फील कर सकते हैं. अल्ट्रावायलेट को न देख सकते हैं न फील कर सकते हैं. रेडियो वेव्स को न देख सकते हैं न फील कर सकते हैं. बात समझ आई? अच्छा, यू नीड टू नो द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम टू. वो मैं आपको बताऊंगा इन प्रॉपर्टीज के बाद में. दे कैरी नो चार्ज एज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ. ठीक है, दे हैव नो चार्ज. दे हैव नो चार्ज. दे ऑल यूज और ओबे द वेव इक्वेशन v is equals to f lambda. सारी की सारी वेव्स इस इक्वेशन को यूज करती हैं. दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. हमेशा आपके पास सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं? एनर्जी ट्रांसफर करती है. Any source that loses energy, a source will lose energy when it radiates. That means it give out electromagnetic waves. And a source will gain energy when it absorbs electromagnetic waves. Like let's say infrared. When we absorb infrared, we feel warm because we have gained heat energy. Similarly, if there is a warm object present, it will give out infrared radiations. It will feel cooler. हम खुद इंसान जो है वी आर ऑल टाइम्स एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस. आपने देखा होगा कोरोना में वो जो थर्मोमीटर था जो आपको लगता था अभी फायर कर देगा इसके अंदर टेम्परेचर चेक करने के लिए. हाउ डज दैट वर्क? हमारी बॉडी से रेडिएशंस निकलती है. नॉर्मल रेडिएशन, नॉर्मल टेम्परेचर पे कितनी रेडिएशंस निकलती है वो ऑलरेडी हमने स्टोर किया हुआ है उसमें डेटा. जैसे ही हम जाते हैं थर्मोमीटर के सामने, इफ द रेडिएशंस आर लार्जर देन द नॉर्मल. अब वो नॉर्मल कितने ज्यादा है? लेट्स से 10 रेडिएशन ज्यादा है तो 100 डिग्री टेम्परेचर है और 100 केल्विन टेम्परेचर है. अगर आपके पास 50 रेडिएशन ज्यादा है नॉर्मल से तो 103 हो गया एंड सो ऑन. तो उससे आप टेम्परेचर को ऐसे डिटेक्ट कर सकते थे विदाउट टचिंग. बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहाँ तक? सो दीज आर 9 कॉमन प्रॉपर्टीज. यू नीड टू जस्ट लर्न 3 to 4. दैट्स इट. उसके बाद you need to know the order in which the electromagnetic spectrum is present. Why with your No. वो तो लाइट का स्पेक्ट्रम, प्रिज्म का था. विबग्योर इज इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसको मैं यूं याद करता हूं, मुझे इस तरह याद हो गया है. देखो आपको हो सकता है इस तरह याद हो. अगर याद हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है. देखो इसको हम तोड़ेंगे 3 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में. एक हो गया आपके पास ये वाला, एक हो गया ये वाला. सेंट्रल पार्ट है एक. सबसे सेंटर में जो है वो लाई करता है विजिबल लाइट. कौन? विजिबल लाइट. टू द एक्सट्रीम लेफ्ट इज गामा एंड टू द एक्सट्रीम राइट इज रेडियो वेव.
बीच में क्या है? रुक जा, ठीक है। गामा के साथ रहती है उसकी एक्स, और विजिबल लाइट के साथ है उसकी अल्ट्रा वायलेट, उसकी यूवी, और विजिबल लाइट के साथ है उसकी आईआर, इंफ्रारेड, और रेडियो वेव के साथ है, कौन बताओ, उसकी म्यू, माइक्रोवेव। हाँ वो एक सेंटेंस है उसका, बताओ बताओ बताओ। मुझे हाँ रिच मैन, हाँ वही बताओ। Rich men in Venice use X-ray guns. X-ray guns. ये ज़्यादा से सही टेबल नहीं, टेबल मजेदार है, सर वो पढ़ा है। हाँ चलो ठीक है, चलो ये ज्यादा अच्छा है, जिसको ये अच्छा लगता है तो ये कर ले, ठीक है। रिच मैन इज रेडियो वेव, रिच इज रेडियो वेव, मैन इज माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, वीनस से क्या है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। हाँ मैं वीनस बोलता हूँ कुछ चीजों को, जैसे मैं उसको बोलता हूँ, बाद में बताता हूँ, याद आएगा। ये क्या है, यूज अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है, सही है। सो जिसको ये आसान लगता है वो इसी को फॉलो करे। रिच क्या है? रिच मैन, रिच का वो क्या है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, वो क्या है? विजिबल लाइट नहीं, रिच मैन इन हमारे जो माइक्रोवेव से ये एवरीथिंग यूज होता है, इनविजिबल नहीं, इंफ्रारेड और वो विजिबल लाइट। जैसे मैं जीनियस को जेनियस बोलता हूँ, विजिबल लाइट, और वो है अल्ट्रा वायलेट, यूवी, हाँ, और वो एक्सरे और वो गामा। आपको पता है वो जो वुल्फ होते हैं ना, उनका गैमा होता है आखिरी। हाँ, ये गैमा बीटा बात समझ आ गई? लोमड़ी होगा। सही, क्लियर हो गया, लोमड़ी होगा। कोई मसला? अच्छा अब जरा देखो, अब वीनस के अंदर जाओगे ना, सॉरी चलो वेनस के अंदर जाओगे तो विजिबल लाइट के अंदर क्या मिलेगा आपको, विबग्योर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? विबग्योर मिलेगा। विबग्योर लाइट यार, जितने कलर्स हम देख सकते हैं। अच्छा अगर इसको इसी अगर हाँ अगर इसको सीक्वेंस में करना है तो विबग्योर को मैं जरा उल्टा करके लिखूंगा यहाँ पर, रॉयग विब, ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहे। ये पेपर में लिखते कैसे हैं? 1 2 3, मैं भी बस इसके क्वेश्चंस कराता हूँ, मजा आएगा। सही है, इसका तो लिख लिखा हाँ एग्जैक्टली। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आप देखो, जब गामा रेस से जाते हो, गामा रेस से जाते हो रेडियो वेव की तरफ, गामा रेस से रेडियो वेव की तरफ, तो गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये लिख लो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सर आपने कहा था फ्रीक्वेंसी चेंज। यस, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी ना वो थ्रू आउट सेम रहेगी, एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रू आउट सेम रहेगी, अल्ट्रावायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रू आउट सेम रहेगी, ठीक है। हाँ अब ये चेंज, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक पूरा गन है, मतलब आपके पास आपकी दुकान में सिर्फ एक्स रेज थोड़ी है, गामा रेज भी है, वेनस भी है, उसमें आपके पास इंफ्रारेड भी है, उसमें माइक्रोवेव भी है, रेडियो वेव्स भी है ना। तो हर एक के रेट, मैं कह रहा हूँ रेट चेंज नहीं होते मेरे दुकान के, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब एक रेट पे दूंगा, हर माल एक रेट पे। तो इन सब के फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होती, लेकिन हर एक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना। मैं कहता हूँ मेरे क्लास में जो बच्चे आएंगे उनका नाम मैं चेंज नहीं करूंगा, तो इसका मतलब थोड़ी है सबको कॉलेज में बुलाऊं, सही है। हर एक का अपना अपना नाम है, जो है वही रहेगा, मैं चेंज नहीं करूंगा, सही है। सो इसी तरीके से आप अगर यूं जाओगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे इसको फॉलो करो, वॉलेट से रेड की तरफ जाते हो तो वॉलेट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और रेड की सबसे
कम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी आप एनालाइज कर सकते हैं, वो है एक होता है साउंड, क्या होता है, और एक होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? जो स्किन के अंदर वाले वो लेके क्या बोलने के लिए? अच्छा, बताता हूँ। अल्ट्रासाउंड इज यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है जी वो उससे उनसे पैसे ले रहे हैं अहमद भाई से। हाँ? अच्छा देखो, अगर वो गए ना तो फिर आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो फिर वो अहमद भाई नहीं है क्या, अभी होंगे, देखो। ऑलराइट, सो नहीं लेके जाएंगे तुम्हारी बिरयानी से। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें तो इट हैज अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन साउंड, इट हैज अ फ्रीक्वेंसी। इंफ्रासाउंड की बात करें, इट हैज अ फ्रीक्वेंसी लेसर देन साउंड, इट हैज अ फ्रीक्वेंसी साउंड से ज्यादा है, हमारे ऑडिबल रेंज से ज्यादा है। जो हम सुन नहीं सकते उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड कहलाती है, जो हम सुन नहीं सकते उससे कम वो हमारे सुनने से कम की फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड कहलाती है। इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं वो विजिबल लाइट है, इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी हम नहीं देख सकते, वो अल्ट्रा वॉयलेट है। इससे कम की फ्रीक्वेंसी भी हम नहीं देख सकते, वो है इंफ्रारेड। क्या है वो? इंफ्रारेड। बात समझ आ गई? तो अल्ट्रा वॉयलेट इज मोर फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड इज लेस फ्रीक्वेंसी। अगर कभी आपको ये याद ना रहे ना, ये ऑर्डर, खुदा ना खास्ता, तो आप इस तरीके से भी इस चीज को याद कर सकते हो। देखो, रेड हम देख सकते हैं, रेड कलर हम देख सकते हैं, ये इंफ्रारेड भी रेड कलर है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल फ्रीक्वेंसी से कम है। वॉयलेट हम देख सकते हैं, वॉयलेट हम देख सकते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट भी वॉयलेट कलर है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे विजिबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। सही है, इससे भी आप अल्ट्रावायलेट से अल्ट्रा तो ज्यादा होगा, हाँ। इंफ्रारेड इज इंफीरियर तो कम होगा। जी जी, ठीक है, डन। बात समझ आ गई? इज दिस क्लियर? वधा है ना? Yes, sir. Alright, Yeah. moving further. So you need to know, state that electromagnetic waves travel with the same high speed, ये हमने बता दी, इस ये वैल्यू भी रखवा दी। Describe main components of spectrum, ये भी बता दिया। लास्ट पार्ट है और वो है आपके पास applications. You should know applications to these. इसके applications पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? Applications पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स क्या है? रेडियो वेव इज यूज्ड इन टेलीविजन, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। कहाँ यूज होती है? रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव, सैटेलाइट एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये रिमोट हो गए आपके, आपके मोबाइल में जो एसी के रिमोट आते हैं, टीवी का रिमोट हो गया, या आपके पास एलईडीज के रिमोट्स हो गए, जितने रिमोट्स हैं वो सारे के सारे इंफ्रारेड यूज करते हैं। लाइट ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है इंटरनेट के लिए। लाइट जो है ऑप्टिकल टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अल्ट्रा वॉयलेट सनबेड्स में यूज होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज होता है, स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है। जी जाजिब में को 2000 रुपए दिए थे आप? 5000। 5000 दिए थे? हाँ, कल मैं लेता हूँ, से बस ये रख लेना बस। 2000 रुपए ठीक है। यूबी में काउंटरफेट बैंक नोट्स को डिटेक्ट करने में भी। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये एंडोस्कोपी को कुछ खत्म करने के लिए तो कुछ होता है एंडोस्कोपी, तो उसके लिए अल्ट्रा वॉयलेट लाइट यूज करते हैं ना। लेजर किसके यूज करते हैं? वो गॉस तोड़ने के लिए भी लेजर लाइट ना, ठीक है। इसी तरीके पे अल्ट्रा वॉयलेट सनबेड्स में यूज होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज होती है, स्टरलाइजेशन के पर्पस के लिए यूज होती है। अच्छा, ओके, हमारे पास ट्यूबलाइट्स आती थी, अब तो खैर कम आने लगे, कि उसमें आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट करते हो ना, इट बिगिंस टू ग्लो। इवन वो जो नोट चेक करने वाले डिवाइसेस होते हैं वो भी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं। उसको स्विच ऑन करते हो, तो वो जो ट्यूब होता है उसके ऊपर कोटिंग ऐसी भी होती है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब उसमें आती है, इट टर्न्स ब्लू। Sir, there's a thing that girls use for their nails. UV light. UV light वही बात है जो no check UV use. एग्जैक्टली, तो ये अच्छा सनबेड्स में यूज होती है टैनिंग पर्पसेस के लिए। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो रीजन है हमारा, ये बहुत So ये बहुत कैसे ये भी charge
तो वो सोलर वो अलग वो सोलर एनर्जी है, वो अलग है, ठीक है। लेकिन 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 मैं क्या कह रहा हूँ, ये सन बेड्स यूज होते हैं सन टैनिंग के लिए, ठीक है। सन टैनिंग के लिए ये हमारे यहाँ यूज नहीं होते, ठीक है। ये उस exactly, अफ्रीका में यूज होता है असल में ये। सर अफ्रीका वाले तो बस अल्लाह को ही माने ऑलरेडी माशाल्लाह से। क्या हो गया यार? एक मिनट, there was a post जिसमें इसलिए आपके पास हर जगह की प्रायोरिटीज Are you serious? हाँ हाँ। कसम और से? मैं हाँ, एक्सरेज जो है, एक्सरेज यू कैन यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग। एक्सरेज you can use to kill cancerous cells, again another medical purpose. X-rays you can use for engineering purpose to detect cracks in metals, then gamma rays you can use again to kill cancerous cells, again for the same engineering application to detect cracks in metals, right? तो इसका मतलब है cracks in metals को याद करो और cancerous cells की killing को याद करो, तो गामा रे की एप्लीकेशन भी याद हो गई और एक्सरे की एप्लीकेशन भी याद हो गई, ठीक है। एक्सरे का एक एडिशनल यूज क्या है, मेडिकल इमेजिंग। एक्सरे का एक एडिशनल यूज क्या है, इमेजिंग। लेकिन मेक श्योर एक्सरे के साथ ओवर एक्सपोज नहीं होना, ओवर एक्सपोज हो गए तो दैट कैन कॉज कैंसर टू। गामा रेस के साथ तो ये जो एक्सरे करवाते हैं जी, तो जो अच्छा डॉक्टर होगा ना वो हमेशा आपको एक्सरे यूं करवाएगा कि लेट्स से मेरे वालिद की एग्जांपल देता हूँ, मैं वालिद साहब की एग्जांपल, उनका पहले एक्सरे करवाया फर्स्ट डे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा एक्सरे करवाया 3 दिन बाद उसको चेक करने के लिए कि वो जो हमने प्लेट लगाई है सही लगी है कि नहीं, तीसरा एक्सरे करवाया 1 वीक के बाद, चौथा 2 वीक के बाद, फिर 4 वीक्स के बाद, फिर 2 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 2 साल, 1 साल हो गया, फिर 2 साल बाद, राइट। सो वो हर दफा कोशिश करते थे कि जो गैप है वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि ओवर एक्सपोजर कैन कॉज कैंसर टू, बिकॉज ये कैंसर, ये जो आपके पास एक्सरेज होती है, दे गो एंड दे हिट योर टिश्यूज, दे बर्न योर टिश्यूज, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है। Can gamma rays also do that? दे डू यस, गामा रेज भी यही करते हैं, तो इसलिए जब हम गामा रेज का तो स्पेशल काम तो किसी जाली डॉक्टर से करवाएंगे, कौन से करवाएं? आवा खान से जाली कोई है ही तो नहीं, bro, they use the protection shield. आप सब जाली नहीं है। तो वो बहुत जाली तो नहीं है लेकिन बाज़ औक़ात वो बहुत जुल्म करता है पेशेंट्स के साथ। क्योंकि मेरे हाथ लिटरली 1 महीना प्लास्टर बंद हुआ था फिर भी क्रैक्स नहीं हुआ। अच्छा है, कौन सा अच्छा है? पता नहीं, अल्लाह करे मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। मैं मिलूंगी डॉक्टर आपको किसी दिन। सारे बदले लोगी चुन चुन के तुम। Alright, so we are done with this chapter. Yes. बस वो याद करा दे। बस, ठीक है। Richmond, Venus. Alright, so please हिबा बोल रहा हूँ, इसको क्या नाम है यार इसका, Hina, can you read this sentence aloud 2 times? A rich man in Venus use X-ray guns. Alright, what is rich? Radio waves, Go on. microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X, and gamma rays. Alright, Vadha. Yeah, rich man in Venus use X-ray guns. तो लोग भी Venus बोलते हैं। Alright. Total Venus है। हाँ. Venus की Alright. अलग होती है। Okay, can you Oh yeah, sir ने planet लिखा है मैं। Yes. मैं Radio waves, Alright. infrared, visible light. What was the used one? Ultraviolet. Ultraviolet and Gamma rays and X-rays. Alright. Okay. gamma rays, yes, and X-rays. Alright. Shh.
Alishba. Sir, I have a question. Please Yeah. use Why do we write gamma like the way we write R? All right. Alpha. This is the word alpha, right? This is a Yeah. Latin word which we represent just like this. Then you have beta. This is a Latin word which you represent like this. Like you can pronounce this letter alphabet just like this. You can write it this way or this way, isn't it? Yeah. You can write this like this. You can write this like this. Okay. So X-ray, gamma rays. This is the symbol for gamma ray. This is the symbol for gamma ray. Okay. It's basically an alphabet from Latin word. So the time these rays were detected, at that time they did not know what are they actually and how they are doing all this stuff. They just name them randomly. Like in today, we name random objects as A, B, C or X, Y, Z. So they name them X-rays, gamma rays. So from then on, we are continuously using it. All right. So Alishma, Sir, I have a question. yeah, So this rich man thing, do we have to learn that this sentence, or we can just learn the whole table? Because no, um, the sentence is not required. That was a suggestion from one of the student who can learn easily from this sentence, the sequence. You need to know it in right. sequence, right? The Yeah, sequence it's is very important. easy. So no problem. It's not a necessity at all that you learn the sentence. Okay, like I learned it this way. I split the spectrum into three parts: visible light, gamma rays, radio waves. Gamma has its X and ultraviolet, and then radio wave has its mu and infrared. Hmm? Right? So Yeah. you can learn it anyway. Anyway, it's easy for you. There's no hard and fast rule. Okay, done. Any problem? Any confusion? Okay, Shanza, No. tell me the sequence of the spectrum. rich man, radio waves, microwave, Mhm. rich man in infrared, ultraviolet, लिखे नहीं ना तुमने. ultraviolet लिखे हैं मैंने ये रहे. Radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays, and gamma rays. Gamma rays. Who has the highest frequency? Gamma rays. Gamma rays. Who has the lowest frequency? Who has the lowest wavelength? Lowest wavelength. Oh. Gamma rays. Gamma rays. Who has the lowest frequency? Everyone has the same radius. Radio waves. Who has the lowest frequency? Radio waves. Radio waves. Radio waves. Right? Okay. Any problem? Any confusion? Gamma ki high hai, right? Gamma ki highest frequency. Okay, you can see this page of mine. Yeah. I have The highest frequency, that's why they can pass through your skin. exactly. And like X-rays can pass through your skin. But now, radio waves and microwaves, they can't pass through. So MRI जो करवाते हैं वो क्या यूज होता है? उसमें भी यही है. X-rays use होता है उसमें. एक पे chicken है. उसमें X-rays use Visible होता है. light के ऊपर none of them can pass through your skin. The way your frequency is high. Got it? Is this clear? तुम detect कर लो. So we are done with this. And you can see I have written a much more detail. If you wish to know more about it, you can go through this file. It mentions where each of the wave generates from, where each of the wave comes from, how it's traveling, and all the details are given here. But all that detail is not required. Okay. Is this clear? Yeah, it's clear. Do we have to write the whole thing? Uh, just write down the main stuff that I have discussed today. I'll be sending this file. In fact, I have uploaded this on the Google Classroom. You can download it from there, right? You just, Sir, I but would does it recommend. include the things you like write with your hands during the class? Come again? I mean that does it include the things you write yourself in the class? Because those things explain really well. They explain well. Yeah. It includes almost everything, right? Like I'll be rubbing this stuff because that's
That's what I have discussed. But all this stuff is there. You can see, which was pre-written. All that stuff is included. But this thing, like you can see, this one I added over here. That's not there. Okay. You can take a screenshot of this and include it in then. At times, I update it if I find necessary to include. Otherwise, I let it stay as it was previously. Do you find them helpful? Yeah, the things we do in class, those are really helpful because they actually explain like without saying. Exactly. So we'll move on to some past papers, and you'll see how spectrum questions are being asked. So open to book number 2. Work. Tried finding it or I was getting late. Okay. You're finding it? नहीं बिल्कुल भी नहीं अच्छा